misunderstanding is there, you think? Yeah. We were happy to have kind of a platform to exchange ideas, basically not on religion but on peace. I think today that's what the misunderstanding. Yesterday also one of the Islamic scholars said it's not that religion is bad, but those who practice the faith in the way they understand. I think today what we had as a call where it's not that religion, God is important, but the values practiced, whether it is Islam or Catholic, we hold on to peace, whether it's Hindu or any community. But the sad thing is misunderstanding. Just because a minority does something evil, we consider the whole religion is like Islam is a terrorist, Catholics are into missionary conversion, which is not really true. We see these fringe elements are in all religions. So let's take a call that keeping aside a religion, let it be a faith practice, but in reality, let's hold on to the religion of humanity and promote peace. Thank you. This meeting and this visit to the shrine was a wonderful experience for me, because it is the first time that I am coming inside a shrine of Muslim our brothers. So it was a beautiful experience, of a spiritual experience when I went to that shrine there inside. So it gave me a lot of spiritual experience, that ambience, that peaceful within my heart. That's what I felt, and a lot of information about Imam Hussain and about the Muslims. And people, these days people project Muslims as the terrorists, but now I know that they are not that. But we can't judge Muslims by their act, but they are teaching that we have to judge the Muslims. So now I've got a right understanding of the Muslims and my brothers and sisters, and I would love to have that dialogue with them and to establish a good contact with each other and to bring that peace and harmony in the world. Thank you. Your good name? Santosh. Know about the other religion. Is it important? Yeah, I feel it's very important. In that way, we are having actually 2 weeks courses. This is part of our 2 week courses and exposure visit. And I think it was a very eye-opening session for me. Like sometimes we have very bad understanding of what an Islam is because of the media that is portrayed, a negative picture. But when you come in person, come to know that their spirituality, dialogue, the practices, the good values that they propagate, it becomes an eye-opener. For me, it is an eye-opener where I found a lot of riches that Islam professes and its followers propagate. The values of non-violence, the values of patience and so on. So generally it was a great experience for me. Though it was short, it has been a memorable experience. You are all students? We are all students of theology. We are preparing to be a priest, Christian priest, Catholic priest. Thanks. My name is Gayatri. I'm coming from Coimbatore. I'm working in a civil society organization right now. It's part of a human fraternity forum member. I came here, but it is a very great opportunity for me. Being a woman, I just entered here inside and I heard about the Imam Hussain, the entire life, and the entire history. So far I never knew about this. This is the first time I heard about that. And once I heard about the entire story and just came entire life, it's not a story, it's a real life, and came out of the place, and immediately I felt that I just completed 45 years wasted. But right now I feel like proud to be here. And first time being a woman, I have visited inside and I have visited in here also, and really the proud moment here. Thank you so much. So what is the message to society you would like to give? The message to the society is we all brothers and sisters, we have to believe very strongly. There is no difference in terms of religion, and we have to believe peace and love. That is what I would like to say. What is I am Mr. Simon. I have learned about today about Imam and the Muslims concept, and I have learned that we have to look at the religion in faith, and not in a political way or in a selfish way. When you look at the religious and religious people, we feel that the love and faith is same in all religions. So there is one question here. Yes. About infighting. So Yeah, I have asked you a question about why the Indians and in India Hindus and Muslims and Christians fight. In out of country
Christians and the Indian fight. But normally the people said, from I don't know his name, Maulana said that it is not Muslim and Christian people fight, but in a political reason and in a financial reason or some other reasons are sir behind that, not because due to the religious. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದು ದೈವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಯಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, 90% ಅವರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಶಿಯಾ ಸುನ್ನಿ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಏನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯ, ಈ 3 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ, ಶಾಂತಿಯನ್ನ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಸಾರಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾನಿಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इस डायलॉग में आप भी शामिल हुए, कैसे महसूस हो रहा है? I am Syed Khazanfar, law student from St. Joseph's. I actually felt very overwhelming attending this humanity fraternity program. There's a quote, famous quote saying that let humanity awaken, entire humankind will claim Hussain as their own. So this is what I sense today. After the program was posted, the few Christian clerics asked us and demanded us that they want to visit a Shia mosque there. So me and Zakaria, our brother who is running, who is Hussain, me and Zakaria accompanied the Christian clerics and few other brothers there in the Babul Hawaj, Bengaluru, and Masjid-e-Askri and Rizan Hashim Raza Sajah Khana. We had very fruitful discussions with them, raising questions. We had really very sensitive dialogues between them, understanding and sharing our cultures and ethos and values. It was really, to say, very memorable, and this is what we need. It's a needed hour for the humanitarian dialogue, and that is what एक शायरी है उर्दू में, वो जो कहते हैं, दिल साफ हो किस तरह के इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह के दिल साफ नहीं है. Justice is not prevailed because hearts are polluted. Hearts are polluted because justice is not prevailed. So what's needed here is justice to prevail, so that hearts can be true. Hearts can be like so, so pure, that which arouses very good intentions for the entire humanitarian count. This is what Imam Hussain stood for. This is what we are working for, inshallah. We hope in the next future the world will be fully flourished with peace, brotherhood, fraternity and love. Thank you. ये डॉक्टर ज़करिया की जानिब से प्रोग्राम हुआ है ताकि वो सारे हिंदुस्तान में जो नफरत की लहर चल रही है और इस तरह के जो पॉलिटिकल मामले चल रहे हैं जिसमें फसादात हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, कहीं मस्जिद का मामला, कहीं मंदिर का मामला, कहीं चर्च का मामला, जो हुकूमत हर तरफ से यहाँ के रहने वालों को एक तरह से परेशानी सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से ये पहल है, एक शुरुआत है, ताकि वो हमारी सारी इस इंडिया की जो रहने वाली पब्लिक है वो असल मैसेज को और असल मकसद से वाकिफ हो सके, समझ सके कि सही क्या है, गलत क्या है. इस एतबार से ये प्रोग्राम हुआ. गलत फहमियाँ काफ़ी हैं जी, इस डायलॉग से पता चल रहा है. जी, जहर भर दिए गए हैं मज़हब के ख़िलाफ़, मज़हब के फॉलो करने के खिलाफ. वजह यही है कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों को धर्म की, मज़हब की नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से लोग उसके पॉलिटिकल और इस तरह के जो अनासिर उनके बहकावे में आ जाते हैं. इस वजह से बहुत सारे वो फसादात होते हैं, खुरेज़े होती हैं, हंगामे होते हैं, उसमें ख़ासकर नौजवान गिरफ्तार हो जाते हैं और उनके फिर रोज़ी रोटी और बहुत सारे उनके मामलात होते हैं जो फिर बाद में 10 साल 15 साल बाद उनकी बिल होती है. बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, बहुत सारे हर धर्म के, कि उनको हुकूमत ने वो जेल में डाल दिया है, उनकी पूरी लाइफ जो कैरियर है उनका ख़त्म हो रहा है. इस वजह ज़रूरत है कि हम लोग सब मिल करके वो ये अपने नौजवानों को और इस मुल्क के वासियों को पैगाम दें कि सही क्या है, गलत क्या है, ताकि दिल से नफरतों का खात्मा हो जाए और अपना ईमान कायम. बातचीत जरूरी है जी, मेल मिलाप जरूरी है, बहुत ज़रूरी है. और एक दूसरे के आए जाएं, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे के यहाँ वो दोस्ताना रवाबित बरकरार रखें, तो इससे बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं करीब आने के बाद. आपका नाम और मुझे सैयद मोहम्मद इब्राहिम कहते हैं, साबिक इमाम जुमा मस्जिद-ए-आस्करी, रिचमंड टाउन, बेंगलोर. तो बताइए सर कि आज यहाँ पर जो मुलाकात हुई है
जो डायलॉग हुए हैं कितने अहम हैं और कितने ज़रूरी हैं? It's an important event today. Jesuit students of theology from Anekal, we are here today to meet our Shia Muslim brothers and sisters, to talk to them about Imam Hussain and his sacrifice, and also to learn from them how Imam Hussain faced oppression, and how Imam Hussain practiced patience in his life, how Imam Hussain has become intercessor for all those who suffer. So it's a beautiful time of learning for us. And I believe that Imam Hussein's message is relevant for today and for the days to come, because he stood against oppression. He faced oppression with non-violence. So that is something very important for the day, for today's world and the days to come. Thank Looking you. at world scenario, we hear Palestine issues also discussed. So what do you say about this? Violence in the name of religion, we must oppose. Religions teach peace. When religion is combined with politics, it leads to a lot of difficulties. So human person and the dignity of human person is important. Whoever is a person, no, they are all dignified. They have the rights to live in peace and joy and harmony in this world. So wherever is violence and oppression, we must speak against that. We must work for peace and harmony for all people. There is a tendency that those who speak about peace, they are weak or they are coward, like that. There is a tendency. So what do you say this about this? To speak for peace, only courageous people can do. Courageous men and women speak for truth, speak truth to the power. They stand, they face oppression with non-violence and truth. It's not easy to speak truth. Speaking truth, we need to be courageous from within. So only courageous men and women speak truth to the power. So how should we unite on how should we progress? We need to work together, find ways for reconciliation, find ways to work for peace. In order to work for peace, we must work for justice. Pope John Paul II said, if you want peace, work for justice. Any long-lasting peace would be founded only on justice. We must work for justice. We must work for all people to live in harmony and peace, without discriminating against one another, without putting down one another. We need to come live as brothers and sisters. That's our vocation, to be human person. बोलो. Okay. Yes. आज जेजुइट्स की तरफ से ह्यूमन फ्रेटर्निटी फोरम का प्लेटफॉर्म, एक सेमिनार हुआ था सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी में, और हम उधर शिरकत फरमाए और हम उनको दावत दिए थे, जितने भी क्रिश्चियन फादर्स अक्रॉस द कंट्री शिरकत फरमाए, हम उनको बोले आप हमारी मस्जिद और बाबुल हवाई जो जॉनसन मार्केट रिचमंड टाउन में है, उधर आके देखिए हमारा फेथ क्या है। लगभग 15 क्रिश्चियन फादर्स और स्टूडेंट्स ऑफ थियोलॉजी हमारी दावत पे बाबुल हवाइज, जो शबे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जो हरम जो करबला में है, इमाम हुसैन के भाई, उधर हम दिखाए और उनको बोले कि सिग्निफिकेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इमाम हुसैन मार्टरडम। 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली अहले बैत इस्लाम के लिए उनकी जान दे दी। वो मार्टरडम आज के ज़माने में कैसा रेलिवेंट है, आपको पता होगा, हर जगह दहशतगर्दी फैली हुई है, हर जगह। ये माहौल में हम महात्मा गांधी का मैसेज लेके चलना होगा। महात्मा गांधी क्या बोले? आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। और महात्मा गांधी से सीख के नेल्सन मंडेला भी अफ्रीका को रेवोल्यूशन लाए। हम लोग ये क्रिश्चियन फादर्स को बताना चाहते थे कि आप क्रिश्चियन होंगे, हम मुस्लिम होंगे, लेकिन जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत से हम आगे बढ़ के लोगों तक पैगाम इंसानियत और पैगाम मोहब्बत पहुंचाना होगा। ये क्रिश्चियन फादर्स को बहुत डाउट्स थे इस्लाम के बारे में,
हम हमारे साथ मौलाना सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं जो सीनियर क्लरिक हैं हमारे कम्युनिटी के. वो बहुत से सवाल जवाब क्लैरिफाई करे. और जाने के पहले क्रिश्चियन फादर्स का फीडबैक ये था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम और ऑर्गेनाइज करना होगा. जो यूथ है, यूथ फ्यूचर स्टार्स ऑफ आवर कंट्री हैं. आज यूथ डिविएट हो जा रही है. इंडिया में जो माहौल है, एक ज़माने में हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में डिफरेंस नहीं करते थे. आज का जो जनरेशन है बहुत ब्रेन वॉश हो रहा है. तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स कैसे यूनाइट होके अलॉन्ग विथ अदर रिलीजन्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हम मिलके कॉमन प्रिंसिपल्स जो हैं प्यार, मोहब्बत और भाईचारा, उनके मुताबिक कैसे यूनाइट हुए. आप क्रिश्चियन पैदा होके हैं घर में, मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हम घर के बाहर आते हैं हम एक इंसान के तरीके से, जो मैं सीखता हूँ कुरान शरीफ से, जो हदीस से जो मैं सीखता हूँ, वो सीख को मैं एक्शंस में कैसा बदलता हूँ, वो मुझे एक रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम डिफाइन करता है. तो दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर डायलॉग. देखते हुए आ रहे हैं, आज जो हालात हैं, नफरत का बाजार गर्म है. इस माहौल में इस तरह के डायलॉग होना जरूरी है. इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है इत्तेफाक. अपने लोगों में इत्तेफाक होना चाहिए, या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, इत्तेफाक होना. और एक चीज़ पर इत्तेहाद पैदा होना कि जो चल रहा है बहुत गलती है, अट्रैसिटीज़ हैं, इन लोगों को किस तरह से मना करना, उसका इंतज़ाम खुद इंसान कर सकता है. क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, जुमला लोगों से. आजकल जो एहतजाजात हो रहे हैं उससे जाहिर होता है कि कौन सही है और कौन गलत है. दोस्ती के लिए पहल हर जानिब से होनी चाहिए, यानी दोनों जानिब से भी होनी चाहिए. होनी चाहिए. दोस्ती उस वक्त हो सकती है जब दिल एक हो, वरना कैसा हो सकता है. लेकिन एक आज जाति जो है, एक जाति होनी चाहिए. अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा. सब समझ जाएंगे कि क्या गलती है क्या सही है. बस. लेकिन चंद ताकतें हैं जो एक होने नहीं देती, जो यूनिटी नहीं चाहती है. ऐसा लग रहा है आपको? वो ये जो है आज से नहीं है, फ्रॉम द डे ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से निकला है ये. इसमें आती चीज़ें आती हैं और दफन हो जाती हैं. उसका असर किसी पर नहीं होता. गलत चीज़ों का असर नहीं हो सकता. वो अच्छी चीज़ों का ही हर इंसान समझ सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है. इनकी गलत चीजें रहेंगी, इसके बावजूद हमें यूनिटी होना चाहिए. वो तो हर फ्रॉम द डेज ऑफ ये जो है ऐसा ही चल दुनिया रहा बनी. है. आई विश दैट देयर इज पीस इन पैलेस्टीन. आज जो उनके जो अट्रॉसिटीज हैं वो सब ख़त्म होना चाहिए, और जो भी मजलूमीन हैं उनको रिलीफ होना चाहिए. अल्लाह से दुआ है कि उन सबको के मुश्किलों का अल्लाह आसान करे. बेंगलुरु में क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग, क्रिश्चियन मुस्लिम यूनिटी का, क्रिश्चियन मुस्लिम दोस्ती का खुशनुमा मंजर. जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं ईसाई और मुस्लिम भाइयों की मुलाकात का, आपस में बातचीत और डायलॉग का. अल्लाह और उसके रसूल और कुरान और हदीस और रिवायात और तारीख और पैगंबर के बहुत सारे इरशादात के मुताबिक whoever is being oppressed, whoever is suffering, whoever is dying out of because of the powerful regime of oppressors killing people, Imam Hussain is an intercessor for all those who suffer, all those who are oppressed. Don't mix your faith with religion and politics. Okay, no, whatever faith I have, but faith is different. Nothing. There is no controversy on religion. Politics is different. Religion is different. Don't mix it. The moment you mix it, you will get confused. And we need to be proud to be in India. I think India is the safest country for be it Christians, Muslims, or anyone. Muslims are not safe in Muslim countries today because of the fringe elements and everything. So let us, as proud Indians, let us stand united irrespective. We are the last generation, a generation after us. Things are very bad. The young students are getting radicalized. When we were kids, we never used to see who's Hindu, Muslim, Christian. Today, Muslims are making friends with only Muslims, Hindus are making friends only with Hindus and Christians. Let us
आज बतारीख 6 जनवरी 2024 बरोज सनीचर क्रिश्चियन भाइयों का एक वफ्द बेंगलुरु के रिचमंड टाउन में मौजूद मस्जिद-ए-अस्करी और इस मस्जिद के इहाते में मौजूद बाबुल हवाइज आया हुआ था। इस क्रिश्चियन डेलीगेशन ने मजहब-ए-इस्लाम, शिया मकतब फिक्र, वाक़िया करबला और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक मालूमात हासिल की। हु इज हुसैन नामी तंजीम के नुमाइंदे डॉक्टर जकरिया अब्बास की दावत पर ये डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था। मस्जिद-ए-अस्करी व बाबुल हवाइज का दौरा करने के बाद अज़ाखाना मिर्जा हाशिम में मुस्लिम और ईसाई भाइयों में तवील गुफ्तगू हुई। इस डायलॉग में मस्जिद-ए-अस्करी के साबिक इमाम जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद इब्राहिम और दीगर ने शिरकत की। इस डेलीगेशन में ज्यादातर थियोलॉजी के स्टूडेंट्स थे जो आगे चलकर ईसाई पादरी के ओहदों पर फायज होंगे। इस मुलाकात और गुफ्तगू के बाद तमाम ईसाई नुमाइंदों ने खुशी का इजहार किया और अक्सर ने ये बात कही कि उन्हें पहली मर्तबा मुसलमानों की इबादतगाह में आने का मौका मिला, इस्लाम और इस्लाम की तारीख को जानने का मौका मिला। इस मौके पर हुए सवाल जवाब में मजहब-ए-इस्लाम के बुनियादी उसूल, शिया सुन्नी में क्या फ़र्क है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा और हकीकत, इस तरह मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। ईसाई भाइयों की जानिब से पूछे गए सवालों का मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद इब्राहिम और डॉक्टर जकरिया अब्बास ने जवाब दिया। इस मौके पर यह पैगाम दिया गया कि दुनिया में बिलखुसूस हिंदुस्तान में अमन व इत्तेहाद, पीस एंड यूनिटी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहें, आपस में डायलॉग, बातचीत, रवादारी, दोस्ती कायम रखें, क्योंकि चंद ताकतें सियासी फायदे के लिए समाज में नफरत, दुश्मनी, हेट को बढ़ावा दे रही हैं। इन मुट्ठी भर ताकतों को शिकस्त देने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहें, एक दूसरे के मजहब को समझें, एक दूसरे के अकीदे को जानें और एक दूसरे की कदर करें। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। And also, if you know the famous words of Mahatma Gandhi ji, he has said, "I learned from Hussain how to achieve victory while being oppressed."